Ah, Nishit, are we good to go? yes, ma'am. Okay. So, good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the virtual conference on strengthening Madhya Pradesh agri logistics sector, the challenges, opportunities, and a roadmap. We have a distinguished panelist. We have Mr. Dhaval Raval, Chairman and MD, Abhyudaya Group. Mr. Yogesh Dwivedi, the CEO of Madhya Pradesh Consortium of Farmers Producers Company Limited. Mr. Naresh Maheshwari is yet to join. Mr. Sanjay Talukdar, General Manager Nabad Madhya Pradesh Regional Office. Mr. Akhilesh Rathi unfortunately could not be present. He has some family emergency. I would request Mr. Dhaval Raval to deliver his address. Before that, a brief on Mr. Dhaval Raval. Nishit, can we have the profile? Yes, Mr. Dhaval Raval is the Chairman and Managing Director of Abhyudaya Group. Mechanical engineer by profession, 26 years of experience. Mr. Raval is also the chairman of Maharashtra Gujarat Council Agro and Food Processing Committee, a very active member and a great visionary to, and we have, experienced his to working with him and a very active member with ASSOCHAM. So over to you. We look forward to hearing from you. Thank you, Sumita. So, good morning to all and welcome. On behalf of the ASSOCHAM Western Indian Council, I welcome you all on this webinar on the strengthening Madhya Pradesh Agri Logistics Centers. As we know, logistics is a very key for growth of any sector. And if we consider Madhya Pradesh, we know that Madhya Pradesh is a leading producer of various oil seeds and food grains and pulses and wheat. Also, Madhya Pradesh is second in the production of various spices, mustard, green peas, guava, green chili, onion, and also some fruit crops are there. But I want to point out some of the my observations. Despite having a very large scale cultivable land and very good agriculture growth in this Madhya Pradesh, we need to focus on the agro processing opportunities, as well as creating some aggregation points. As we know that Madhya Pradesh don't have any direct access to the ports, and the export market of agri and food processing sector is now booming up from India. And we foresee that India will become a food basket of the world. And the government has a policy to promote this sector. I believe that the interaction today between all the stakeholders and experts will enable us to do some value addition and brainstorming that how Madhya Pradesh can achieve the benchmark in agri logistics sector. And I also want to thank all the various organizations and institutes like NABARD, TCI, Renew Power, and SpiceJet for giving their support to this event. Today we have with Mr. Yogesh Dwivedi. He is a CEO of a Madhya Pradesh Madhya Bharat Consortium of Farmer Producer Company. We have with Mr. Naresh Maheshwari ji. He is a Managing Director of FTI Food Tech. Also, Mr. Sanjay Kumar Talukdar. He is a CGM NABARD. And Mr. Akhilesh Rathi from the Dainik Bhaskar. And apart from that, so many various farmer FPOs, organizations, and stakeholders have joined this meeting. I request you all to please give your inputs, suggestions, that how we can strengthen the Madhya Pradesh Agri Logistics Center. And by doing this, I hope that Madhya Pradesh will be a leading state in the
agro, food processing, and exports through the Agri Logistics Center upliftment. I thank you all, and now I hand it over to Sumita for the program. Thank you. Thank you, sir. Very well said about Madhya Pradesh setting a benchmark to become the leading agri logistics sector. Sir, there is a presentation from your side. If we could have a look at that as well. Yeah, Mr. Utsav will do from my office. Okay. Okay. Utsav, So are we first, ready? yeah, we will summarize in the last. First, I want to invite the various speakers and guests to elaborate on the subject. Then we will summarize in the Sure. last. Sure, sir. So, I'm inviting Mr. Yogesh Dwivedi, CEO, Madhya Pradesh, Madhya Bharat Consortium of Farmer Producers Company. Very warm welcome to you, sir, and you agreed on a short notice, and we are actually looking forward to hearing from you, sir. Can we have his profile, please? So, Mr. Dwivedi is working with the State Federation of Farmers Producers Organization, and since 2014, and they have an organization with 1.67 lakh farmers, also coming from a farming family, 22 year experience on promotion of sustainable agriculture. So the profile is indeed very impressive, and we are looking forward to hearing from you, sir. Over to you, sir. Sir, you're not audible. I think it's on mute. सॉरी सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी सभी को नमस्कार मैं योगेश द्विवेदी और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मध्य प्रदेश या पीओ फेडरेशन ऑफ वी मध्य प्रदेश इनफैक्ट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश बोथ एपीओ फ्रॉम बोथ स्टेट्स आर एसोसिएटेड विथ मध्य भारत और जो आज का जो टॉपिक है बेसिकली एग्री लॉजिस्टिक सेक्टर मध्य प्रदेश में इनफैक्ट अगर हम लोग देखेंगे पिछले लास्ट 1 डिकेड से 10 सालों से तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और कुछ हमारे लॉजिस्टिक्स हब्स जैसे इटारसीज और कुछ जगह पे काफ़ी सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हुए हैं पर अभी जो हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं बेसिकली फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वी आर वर्किंग मोस्टली रिमोट एरियाज जो ट्राइबल एरियाज है सो ऑल्दो जो लॉजिस्टिक्स का इफ वी सी दी ओवरऑल डेवलपमेंट तो वो स्टेट में काफ़ी पॉजिटिव है पिछले 10 सालों में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं पर जो अभी करंट नीड है जिस तरह का जो हमारा एमएसपी ऑपरेशंस है जो हमारा प्रोडक्टिविटी है पर्टिकुलरली जो हमारे क्रॉप्स की जो सीरियल्स क्रॉप है चाहे वो व्हीट हो चाहे पैडी हो वो काफ़ी तेजी से बढ़ रही है और उसमें गवर्नमेंट का भी जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स इंश्योरिंग जेन्युइन प्राइस टू द फार्मर्स सो गवर्नमेंट भी उसमें स्टोरेज और इसमें काफ़ी फोकस कर रही है पर अभी भी डेफिसिट है जो हमारी नीड है और जितना रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है और अभी सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और आज ही इनफैक्ट करीब 4,000 करोड़ का टोटल अनाउंसमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे जो ऑनरेबल सीएम है वो लोग कर रहे हैं बेसिकली डिफरेंट जो छोटे टाउन्स हैं उनको सिटीज से जोड़ने का काम चल रहा है पर अभी जो मेन इश्यूज ये जरूर है कि जो ट्राइबल इलाके हैं जो बैकवर्ड इलाके हैं पर्टिकुलरली हम अगर बुंदेलखंड के पार्ट में चले जाएं या ईस्टर्न मध्य प्रदेश में हम चले जाएं या हमारा जो बघेलखंड और जो हमारा एडजेसेंट एरियाज और उत्तर प्रदेश और वहाँ पे अभी जो लॉजिस्टिक का इश्यूज है वहाँ पे वेयर हाउसिंग और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा है और अगर हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम लोग इंटायर मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ हमारे एपीओज अभी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा जो कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट का वो उतनी ज़्यादा नहीं है तो वो छोटे छोटे 500 मेट्रिक टन 200 इस तरह के छोटे वेयर हाउसिंग पे काम कर रहे हैं साथ में ग्रेडिंग और फैसिलिटीज या प्रोसेसिंग कैसे करें ग्रेन वो वही उसमें भी काम कर रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट से भी मिलके और काम कर रहे हैं बट स्टिल वो पर्याप्त नहीं है और अभी नई जो टेक्नोलॉजीज आई हैं पर्टिकुलरली जो
आपके जो मैकेनाइज स्टोरेज की हम बात करें, जो अभी जो नए वो टेक्नोलॉजीज जो है वो मध्य प्रदेश में अभी कुछ प्राइवेट सेक्टर अभी लेके आए हैं, लेकिन वो जो है अभी भी बहुत कम है। और हमने देखा कि कुछ मालवा रीजन में और कुछ हमारा जो सेंट्रल एमपी है इटारसी में, वहाँ पे इस तरह के कुछ हब बने हैं, पर अभी अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो वो काफी कम है और उसमें काम करने का जरूरत है। बट जो मैं देख वही जो कांस्टेंट मेनली है कि जो एपीओ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका जो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है या उनका जो फाइनेंशियल जो उनकी एबिलिटी है वो उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें काफी इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकता है। और अभी ज्यादातर जो वेयर हाउसेज है वो, अगर हम इधर देखेंगे, आप मध्य प्रदेश भोपाल से और होशंगाबाद रोड इधर जाएंगे, एक पूरा एक चैन है वेयर हाउसिंग, काफी स्ट्रांग प्रेजेंस है, पर बहुत सारे एरियाज में कम है। तो मैं इनफैक्ट जो हमारे एसोचैम से जो जुड़े हुए जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे हम यहाँ पे मैं अपील करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में काफी पोटेंशियल है और जो हमारे पास वेराइटीज ऑफ प्रोड्यूसेस है, और उसमें काफी जो हमारे सीरियल्स हो, हमारे पास मिलेट्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, वेजिटेबल्स को लेके हमारे जो अभी चेयरमैन अभी सोचा जो बात कर रहे थे कि काफी सारे जो यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेकर के भी मध्य प्रदेश में काफी स्कोप है। और काफी सारे अभी हमारा, चाहे ऑरेंज की हम बात करें, मैंगो की बात करें, गुआवा की बात करें, अभी हमारा स्ट्रॉबेरी, ये सब प्रोडक्शन, ग्रेप में काफी इस तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं। पर वहां पे जो स्टोरेज की जो फ्रूट्स, अगर वेजिटेबल के हम स्टोरेज की बात करेंगे, वो काफी पुअर है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग ओनियन पे काम कर रहे हैं और कुछ ओनियन के इंफ्रास्ट्रक्चर नाफेड के माध्यम से कुछ मध्य प्रदेश में बने हैं, कुछ प्राइवेट के सेक्टर के लोगों ने भी बनाए, बट स्टिल बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही नेग्लेजिबल है। मतलब अभी जितना प्रदेश में, अभी हम लोग लगभग सेकंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर हो गए ओनियन के महाराष्ट्र के बाद। लेकिन हमारा जो स्टोरेज कैपेबिलिटी है, जो हमारे पास फैसिलिटीज है, वो काफी पुअर है। और हम लोगों ने जो ये स्टोरेज अभी करते हैं उसमें से काफी बड़ा लॉस होता है, 40% 50% लॉस हो जाता है, और उसको कम करने का काफी जरूरत है। तो हमारे किसानों को हम लोग उसी समय ज्यादा फायदा दे सकते हैं। और ओवरऑल ये जो पूरा सेक्टर है एग्रीकल्चर का, वो काफी उसमें उसके जो हमारा हार्टिकल्चर एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स के जो सेक्टर है उनको काफी सपोर्ट मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि हमारे पास स्टोरेज के और इस तरह के जो प्रोसेसिंग और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में और यहाँ पे स्टेब्लिश हो। ये इस तरह का हम आगे इसमें बढ़ पाएंगे, क्योंकि किसानों के साथ वही प्रॉब्लम है कि अगर वो डिस्ट्रेस सेल करते हैं, प्रोडक्शन अभी आने वाला है, जो हमारा मेन रवि का जो प्रोडक्शन अभी ओनियन का हो चाहे हमारा गार्लिक के हो, तो गार्लिक का तो फिर भी किसान अपने लेवल पे मैनेज करते हैं, पर ओनियन का भी कर रहे हैं आज जो किसान फार्मर ऑलरेडी छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना के अपने घरों में कर रहे हैं, पर वो पर्याप्त नहीं है। तो हमारा, मैं आज का जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, नाबार्ड के हमारे सर भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एपीओज भी इसमें काम करना चाहता है, पर एपीओज के पास जो अभी करंट जो स्कीम्स है वो शायद उतना पर्याप्त नहीं है कि उसको इतनी ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, जिसमें क्योंकि जो मैं बताया कि इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी एपीओज की कम है। वो एग्रीगेटर का अच्छा काम कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट उनके पास जो छोटे कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज करते हैं, तो थोड़ा सा उसमें सपोर्ट करने का आवश्यकता है। और कई जगह हम पीपीटी मोड में, महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम हुआ है, हमारा जो काउंटर पार्ट है महा एफपीसी, उन लोगों ने 21 करोड़ का भी एक पिछले साल नाफेड के साथ मिलके ओनियन का एक अल्ट्रा मॉडर्न स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ऐसा स्कोप मध्य प्रदेश में भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज है, ताकि जो लॉसेस है हमारा एग्रीकल्चर का, जो स्टोरेज के प्रोडक्शन के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है वो कम किया जा सके, एंड ओवरऑल स्टेट के डेवलपमेंट में भी काफी मदद मिलेगा। और इंडस्ट्री के लोगों को भी अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी इसमें जो है काफी ग्रोथ और काफी उनको फायदा मिल सकता है। लेकिन केवल रिक्वेस्ट ये है कि जो सेंट्रल मध्य प्रदेश है उसके अलावा भी थोड़ा सा हमें दूर में, और जो हमारा जो रिमोट एरिया है, ईस्टर्न एमपी है हमारा, बुंदेलखंड बघेलखंड, इस वाले पार्ट में भी जाने की जरूरत है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। और मैं आज का जो वर्कशॉप है उससे काफी हम लोग होपफुल है कि जो इंडस्ट्री के माध्यम से और गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके फोकस किया हुआ है, उसके काफी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। थैंक यू।
सर मेरा एक सवाल था आपसे आपकी जी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कुछ बताएं सो एवरीबडी नोज द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग द गुड एक्टिविटी वर्क दैट यू आर डूइंग सर राइट। थोड़ा एक ब्रीफली आप बताएं। मैम जैसा कि आपने बताया था, हम लोग 2014 से मध्य प्रदेश में बेसिकली 2010 के आसपास जो एफपीओस का नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ था, वो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पे 2005-6 में एफपीओस को लेके काम शुरू किया था। एक डीपीआईपी प्रोजेक्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट का, उसमें इस तरह के पायलट हुए थे। और इसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने बाद में मध्य प्रदेश के पायलट को, जो हमारे यहाँ के सीनियर ऑफिसर्स थे, वो दिल्ली में जाके और इसको उन्होंने प्रेजेंट किया। तो काफी सारे एफपीओज मध्य प्रदेश में बने थे, और इंटायर करना केवल मध्य प्रदेश से बल्कि दूसरे राज्यों में बने थे। और मध्य प्रदेश में भी ये हुआ कि जब एफपीओ बहुत सारे बन रहे हैं तो उनको एक सिंगल विंडो, एक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जिस बहुत सारे जो इश्यूज है, चाहे वो मार्केट लिंकेज के हों, चाहे फाइनेंशियल लिंकेज के हों, गवर्नमेंट पॉलिसीज के, उसको लेकर स्टेट फेडरेशन बना था। और पिछले 5-6 सालों में हम लोग काम कर रहे हैं। अगर हम एज ए फेडरेशन, हम सभी स्टेक होल्डर जो हमारे मेंबर है और उनका टर्नओवर देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ का हम लोग बिजनेस करते हैं, एग्री बिजनेस से काम कर रहे हैं। मध्य भारत का एलोन जो है वो हमारा एवरेज लगभग 30 करोड़ का हम सालाना हमारा टर्नओवर है। वो वेरीज कर रहा है, कभी हम 100 करोड़ भी क्रॉस कर गए और कभी कम भी हुआ है पिछले कोरोना और इसमें। बट स्टिल पिछले साल हमारा 30 करोड़ था, पिछले फाइनेंशियल के ईयर का भी लगभग 20 करोड़ के आसपास अभी हम लोगों ने काम किया। जो मेन हमारा काम है उसमें हम लोग एग्रीगेटर का काम करते हैं। जहाँ तक हमारा जो है सोयाबीन को पे हम काम कर रहे हैं, पल्सेस पे काम कर रहे हैं, व्हीट पे काम कर रहे हैं। और हमारे जो एफपीओज हैं तो दो तरह का मॉडल, बेसिकली अमूल पैटर्न पे हम काम करते हैं। पहले तो हम अपने एफपीओज को डायरेक्टली फॉर मार्केट से लिंक करते हैं, और जो उनके पास एफपीओज हुआ ऑलरेडी एस्टेब्लिश एफपीओज हैं जो थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, वो मार्केट में डायरेक्ट भी काम करते हैं। लेकिन जो नए एफपीओज हैं जिनके पास फाइनेंशियल अभी उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, या उनके पास उसकी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वो हमारे थ्रू काम करते हैं। और जो सरप्लस उनकी क्वांटिटी होती है वो मध्य भारत के थ्रू वो सेल करते हैं। और इस तरह का मॉडल हमारा है। और हमारा 3 टायर स्ट्रक्चर्स है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। और कुछ हम रीजनल प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इस तरह की फैसिलिटी भी क्रिएट करते हैं। मंडी बोर्ड से हमने देवास में 2000 मैट्रिक टन का वेयर हाउस लिया हुआ है। उसको हम लोग वहाँ के जो हमारे आसपास के एफपीओज हैं वो अपना प्रोड्यूस वहाँ पे रखते हैं, और वो हमने गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडाइज रेट पे दिया हुआ है। इसके अलावा भी हम लोग दूसरे ईस्टर्न एमपी में भी हम लोगों ने कई इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए, बट वो ज्यादातर छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर है। 500, अभी 1000 एमटी में भी हम बुंदेलखंड में भी पृथ्वीपुर में हमारा एफपीओ अभी वहाँ पे 1000 एमटी का भी इस तरह किए कई सारे। कुछ अभी नए नए भी हम लोग छोटे छोटे वेयर हाउस बना रहे, करीब 10-12 वो पाइपलाइन में है। तो ज्यादातर काम हमारा है कि जो रॉ मटेरियल है उसमें थोड़ा सा हम प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन करके और कैसे हम बेटर प्राइस हम अपने फार्मर्स को दे पाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ में प्रोडक्शन पार्ट में भी पर्टिकुलर हम काम करते हैं। प्रोडक्टिविटी जो नई टेक्नोलॉजीज है उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे अभी जो इस तरह का भी सोयाबीन में पर्टिकुलरली जिस तरह क्लाइमेट चेंज का अभी चैलेंजेस आए हैं कि हर साल ज्यादा वो एक्सेस रेनफॉल से पल्सेस काफी खत्म हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है आइस एंड पल्सेस दोनों का। उसको कैसे कम किया जाए, उसको लेकर नई जो टेक्नोलॉजीज है, रीजन फरो है, ब्रॉडबैंड फरोज मेथड है, ये लेकर हम लोग भी फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। अभी मध्य भारत जो है, मध्य प्रदेश से, चूंकि हमारा नाम मध्य भारत था तो मध्य प्रदेश से हम लोग छत्तीसगढ़ में भी अभी हम पहुंच गए हैं। 19 ब्लॉक्स में छत्तीसगढ़ में काम करें, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। और मध्य प्रदेश में हम लोग 42 डिस्ट्रिक्ट्स में है यहाँ पे, जो हम लोग अपना ऑपरेशन जो है हमारा चल रहा है। थैंक यू सर आपके सुविचार के लिए थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने बताया हमको इसके बारे में। एंड सर्टनली हम कोशिश करेंगे कि एसोचैम के थ्रू हम ये नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जाएं। हमारे थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू सो हमारे मच। our next speaker is Mr. Naresh Maheshwari. Sir is the Managing Director, FTI Food Tech Private Limited. Nishit, can we have sir's profile? Okay, sir is a food technologist having over 30 years of experience in food industry and founder of FTI Food Tech Private Limited. Basically providing food technology services to processed food industry global company, and have been rewarded by Economic Times and SIDBI. So we look forward to hearing from you from the technologies, food technologies perspective. Over to you, sir.
Mr. I think Maheshwari? Mr. Maheshwari has some technical problem, so we are looking into it. We can move to next speaker, ma'am. Not an issue. So, our next speaker is Mr. Sanjay Kumar Talukdar, General Manager NABARD, Madhya Pradesh Regional Office. A very warm welcome to you, sir, and thank you for supporting this virtual conference. Mr. Talukdar's profile is currently General Manager at NABARD Madhya Pradesh, has about 30 years of work experience and across country. And before joining Bhopal office, he was a faculty at NABARD Staff College, Lucknow. Graduation with MA in Economics. So we look forward to hearing from you and your insights on NABARD. Thank you, sir. Over to you. Good morning, Savi ko namaskar. Hope I am audible to you all. Ji sir, namaskar. Achha. At the very beginning, I convey my thanks to ASSOCHAM for selecting a topic which has been a matter of discussion at various levels of policy making in Madhya Pradesh. As we all know, agriculture contributes about 36% of the state's economy, Madhya Pradesh economy. That's something like 3.6 to 4 lakh crore. If we say that the state GDP is about 10 lakh crore post-pandemic. Volume-wise, too, it's a huge quantity, 66 million tons. Somebody coined the term problem of plenty. Such a huge volume needs to be transferred efficiently and profitably to the consumption centers. Because as you all know, agriculture is scattered and it's small units. But the second important part, but not yet fully realized, is that with increased urbanization and the demography of the country changing, the way food is being delivered to the final consumer is undergoing change. That has already happened in the Western nations, developed nations, and it is happening, undergoing this change in our country. Production, as usual, primary agriculture, but delivery to final consumer is happening in a manner what we call as secondary agriculture. I hope I'm audible. I'm audible clearly. Yes, sir, you are audible, but we cannot see you. I think your video is off, sir. Okay. I had forgotten to start my video. Is it fine now? Yes, absolutely fine, Mr. Talukdar. What it means that primary productions occurring in villages needs to be collected, if required, processed, and delivered to final consumers across the urban consumption centers. In a manner, the consumers requires it, demands it, and at an affordable price. Then only we can say that the businesses will be successful. Since a farmer in Indian context is not expected to undertake this activity, we have these agribusiness companies. The company will have to deal in, just a minute, okay, there's a phone call. The company will have to deal in procurement, maintenance, and transportation of material and facilities, which we normally call as logistics. It involves a large volume of products. And logistics also play a central role in profitability of an agribusiness company, because procurement has to be done from several small pockets, and again final distribution goes to households spread over a vast geographical area, many a time changing its original form when the primary product is, especially when the primary product is perishable. But here
In this context, and many a times when I have interacted with people, I've realized that logistics is often misunderstood as transport and storage functions alone. But that is not the case. Logistics include many other activities. It is an umbrella term for customer service, for documentation flow. I mean the paperwork that accompanies the flow of physical product. It can be an independent company providing the service to an agribusiness company, or it could be a part of the agribusiness company's vertical. Then demand forecasting. Then inter-plant movement. If you have a plant, to change the form of the primary produce according to the needs and the requirement or the demand of the consumption consumers. Inventory management. Then order processing. When you procure the goods, you don't keep it for your own consumption. You supply it to others or to the consumers as a logistic firm. So you need to process orders. Then you need to do packaging. Packaging, one for marketing purposes and another for protecting the produce. Then the plant and the warehouse site selection. Then scheduling your production. Then the purchasing of inputs. Then traffic management. Then warehouse and distribution center management. All these are part of agri-logistics. But we have misunderstood, or we have reduced it only to transport and storage functions alone. And again, agri-logistics can be divided into two categories, one for perishable commodities and other for non-perishable commodities. Here I would say, for the businesses, the two most important elements of logistics is traffic management, which means planning, arranging, and buying the transportation services needed to move your freight. And then the next is packaging, promoting the product and protecting it. In Madhya Pradesh, the current warehouse storage capacity is about 27 million tons against a crop production of about 66 million tons. If you have an average surplus of 60% in major agricultural crops, there is a requirement of 36 million tons storage capacity. That means we have about 26 million tons. Requirement is 36 million tons. There's a gap of 9 million tons of storage capacity. At rupees 3,000, average cost of creation per ton cost of creation of storage capacity, dry storage capacity. It's an investment opportunity of not less than 2,700 or 3,000 crores. But there's a catch here. Most storage capacity in MP is concentrated only in a few districts like Hoshangabad, Raisen, Vidisha, Ujjain, Indore, Betul, etc. There is uneven distribution of storage space, and when you talk about opportunities where storage space is not fully created or not adequately created are Shivpur, Morena, Damoh, Panna, Manla, Balaghat, Katini, Rewa, these districts. Secondly, logistics in MP currently is highly skewed towards storage only. Opportunity exists for broad-basing to packaging, sorting, grading, assaying, all these activities. In these activities, there is hardly any investment coming in. Businesses are not investing. And there is scope for investment and opportunities exist. That was all for food grains. Next is horticulture.
Currently, only 5% of the produce is processed. So cold chain and processing plant with temperature controlled warehouses are other investment opportunities. I am not going into the milk part, poultry and dairy part. This is what the food grains, grain and horticulture produce, the opportunities that exist. Coming to challenges, I would say the first most and the foremost challenge is the technology. Bringing new and cost-effective technology to run your logistic operations is one, important one. It's highly challenging. The second challenge is in getting bank finance for various logistic activities outside warehouses or logistic functions not commonly extended by banks. The risk perception is high. Who will invest, first of all? Then the question comes, what would be the return on capital in today's pandemic situation? So, keeping in mind these two challenges, I would say the roadmap would be to overcome the challenges and look into new areas of logistics. And for that, we need to leverage from the existing central and state government schemes like Agri market infrastructure schemes and then agricultural infrastructure fund schemes. These two schemes, in addition to warehouses and silos, provides incentives to businesses for sorting and grading unit, primary processing units, depending upon the commodities, cold storages, cold chains, organic input productions, ripening chambers, supply chain infrastructure for clusters, or if you have identified something, if you are an exporter of agricultural produce, then for exports of crops, the supply chain infrastructure, then waxing plants, packaging units, etc. These things can be established with interest subsidy from the government of India. So I would suggest to the business that we need to think of modernizing logistic operations, broad-basing logistic operations from just transport and warehousing facilities. Okay, modernizing in procurement, modernizing in handling, cleaning and drying, then modernizing in bulk transportation and silo storage to minimize losses, and then followed by primary processing as per the demand of the consumers in the urban centers. Because as I said in the beginning, the way consumers, the way food is delivered to the final consumers is undergoing change across the country. I think the business would take full opportunity of various government schemes, and agri-business would become a growth enabler for Madhya Pradesh. Farmers will get better price and the business would also prosper. And NABARD is always there to help, to facilitate this kind of what you call prosperity for the business in the state. I thank ASSOCHAM for inviting NABARD to give an address and make its point of view known to the participants. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Mr. Talukdar. That was really an enlightening, discussion that we had. You very clearly defined the logistics, from the procurement to the packaging to protecting. Very, very helpful insights. And yes, we are looking forward to working very closely with NABARD and continue our relationship definitely. Next, we have Mr. Naresh Maheshwari. So Nishit, are we good to go with Mr. Maheshwari?
Ma'am, we can invite, if his mic and everything is working, we can go ahead. We are trying, we are in touch with him. Okay. Because If we he don't, can hear us, I don't think so. Maybe we can request Utsav to make the presentation. নমস্কাৰ সৰি দেই এই মই ভাষণবাদী কৰি আছিলো শেষ কৰিলো মাত্ৰ আপোনাৰ এছ'চেমৰ Please share the sharing rights. Over to you, Utsav. sir, just a minute. We are making you presenter. Good morning, Utsav. Yeah, good morning, ma'am. Thank you so much for And inviting us here. most welcome, and we are looking forward to the presentation. Yeah. So here we have the need of our agro exports, shipping and logistic capacity building. So our company, to start with our presentation, Abhyuday is India's leading PMC, project management consultancy in agriculture and food processing. And we have an extensive experience in providing turnkey solutions for mega food parks. We have a specialization in cluster development program for various industrial sectors units for food processing, and we have successfully executed various projects. So like more than 4,000 crore work project has been executed by Abhyuday till date, and with our global presence, we are leading towards making a world better in terms of agro and food processing. So these are the common services provided by Abhyuday Group. One is feasibility study, project conceptualization, making DPR for various units, and detailed designing, drawing for civil, MEP, PEB stuff and others. And apart from this, we are also providing assistance to various SMEs in terms of helping them with bank loans and various other processing things, regulatory affairs, licensing and various other stuff. So yeah, this is much more about Abhyuday. Then let us start our PPT, agro exports, shipping and logistic capacity building. So this is really needed in today's time, and reason being the post-COVID container shipping cost rose by 2000 USD, from 2000 USD to 12,000 USD. So there is a huge rise in the shipping container, and demand for shipping increased by 5% during these times. So post-COVID, where a lot of industries were facing crisis, and not much more vibrancy was there. So to provide linkages and to bring some stuff from to import items from various countries in terms of food, processed food and various other stuff, the demand for shipping increased, and the 84% of the volume of merchandise traded worldwide travels by sea. So you can see a graph of here on my screen, where it says from January 2019 to July 2021, and the rates are skyrocketing. They are reaching beyond the limits, and they are going without any boundaries. So reason for high shipping prices are demand spike due to COVID, capacity shortage due to empty vessel storage. This is again a big issue coming in. Then equipment and manpower storage, and next is congestion on ports. So we cannot find ample space outside these shipping ports
and there is a huge congestion there out there. So a shipping, container management is required on the ports, and management for space is also required. So this is the reason for high shipping prices these days. And 65% stake in shipping by 5 major small shipping companies, share reduced from 16% to 56%. So this is a huge issue coming in, and the gravity of issue you can see through graphs on my screen, where it says, the top 5 players were like 27% to 46% in 2008, and then 65% in 2021. So this is rising rapidly. And then comes the current scenario of exports. So as you can see that dollar 262 billion of export increase of 50% over 174 billion in the same period of previous, and imports grew by 75% to 384 billion dollar. India's merchandise export in the month of November were $30 billion, as compared to 23 billion merchandise imports in November came in $52 billion, an increase of 56% over imports of 33%. So it's a figure are telling everything on their own, and nothing to be justified more over this. India has widened its trade deficit to $22 billion as against $10 billion in November 2020. So, as figures are evident of how rapidly this shipping and the logistics sector is rising, and there is a huge need of capacity building in the sector coming in, because this is rising exponentially, and there should be something concrete as a capacity building to make it vibrant and make it robust in terms of infrastructure. So next, coming to the higher shipping cost, higher global food prices and agri food processing sector. Rice export grew by at 13%, and here in F&B grew by 6.1. More affected frozen food, seafood. This was the effect to the food, which I'm telling you. Container cost from $3,300 to $14,500. So this is multiplying like anything, and there is no control over the the container costing and shipping costing, which is very much required in today's time. So as you can see, there is a clip on the left hand side. It says, as price rises, rates turn too hot, spice exporters seek probe into shipping cost. There are people who are making effort and coming up with the representations to various stakeholders in the government, such as MOFP and various other industry level people. So, but there is what lacks is the hand holding from the side of various stakeholders. And one more thing which is very prime and important is the rates should be regularized by the government to enhance and to make it pocket friendly for every SME to get their product shipped. Next, possible interventions are on the screen. There are empty containers lying on at different ports because the rates are too high. No, not everybody, as I said, not everybody can import these days and export these days. So logistic is becoming very a weight on the pocket of the SMEs, and they are not opting this, and lot of products are getting spoiled and getting wasted due to this. Second is JNPT and Mundra depots together account for like about 65% of total container movement. 200 non-major ports, more scalable efforts were done, and vessel containers and the storage infra at ports should be made easily available, because what we are doing is there is lack of storage, as I mentioned in my previous segment of this PPT. There is no space management, and very less people are turning towards this issue. And so next is stop large shipping lines now hauling empty containers from
India to the US. So this is what happening. Large shipping lines are, traveling with the empty containers. What can be done? Because we have to regularize, we have to come up with something, we have to maintain the flow of the containers from one place to other. So large shipping lines only can afford to, these are the only players who can afford to transfer these empty containers to the other part and maintain the regulation of these containers. Next is become a shipper of the choice for shipping companies, signing contracts for year and scheduling in advance. So these are the possible interventions which needed to be done. And at last, towards the end, I would definitely say that the stakeholders should, although they are doing their level best in terms of providing things, the government of India, be it MOFPI, be it various other stakeholders are providing a lot of efforts, in terms of handholding to the SMEs and various other, in various other capacities. But what promptly is needed is the handholding in terms of regulating the charges for the shipping and making it vibrant for the industry to and viable for the industry to ship from one part of the place to the other. So with these words, I would like to close my presentation. Thank you so much for providing us with this opportunity. Thanks to ASSOCHAM. Yeah, over to you, Sumita ma'am. Thanks, Utsav. It was really insightful. Great to hear about the challenges. Also, yes, I understand the empty containers is a big issue with regards to the shipping industry coming, and Right. I We have again joined by our chairman, Mr. Dhaval Rawal. So we have the conclusory, towards my PPT. He would like to conclude the. certainly. Over to you, sir. Yes. Sumita, so we are concluding this session, right? So we'll just have a short Q&A and then we can conclude it, sir. Yeah. So I think we can go for the Q&A, and thereafter, if there is something to summarize, I can or some expert can summarize. Certainly, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. So we are opening the floor for question and answers, and you can post your questions on the in the box. We'll just wait for 5-7 minutes, and then we can proceed with the summary. Meanwhile, if any of the distinguished speakers would like to, comment or any further suggestions, are happy to hear you all. So, Sir, over to you, sir, for the concluding Yeah. remarks. so respected guest dignitaries and the participants, it was very nice to hear from you on this agri-logistics sector of Madhya Pradesh. I just have some 2-3 points in mind. First thing, that tribal belt of the Madhya Pradesh towards the east and west. So these are the very good areas for the organic farming and natural farming. As we know today, the people are more and more health conscious, and they want to go for the I will say that safe and hygiene food. And so organic farming practice is adopted by so many farmers and FPOs. What I suggest that there should be some aggregation point in these tribal areas through various scheme of the FPOs. We know that there is a scheme of 10,000 FPOs development, and it was a vision of our Honorable Prime Minister.
and various states are already working. NABARD is already working on this. So the required is now from Nasik they have started one fruit and fresh veg train that is directly supplying grapes from Nasik to Bangladesh. So what we can do, if we can invite some PPP mode, somebody was saying that PPP mode, we can have a consortium or one SPV where the FPOs are members, some institutes like NABARD can be member, government, state government can be a stakeholder, and we can have some rail routes. That DMIC corridor is being planned from Mumbai to Delhi. So at least, so what I suggest, we can have some we have container stuffing facilities and tripods. We should create some facility for the packing and having some I will say that logistic bogies coupled with the trains that supply these organic fresh vegetables to Mumbai and Delhi from Madhya Pradesh. So what we need on any railway station in the central part, which can be a having a, I will say that junction connecting 2-3 routes from north, south, eastern, western part of the country, somewhere in Madhya Pradesh, where we should have one cold store, we should have one frozen store, and some facility to repack this farmer aggregation of horticulture produce and supplying it to these metros. So we know we are into the agro food processing PMC. We know that okra or peas, which is being purchased at 5 to 10 rupees a kg, if it is a frozen post the season, it is sold at 60 to 90 rupees per kg. So what we can do, we can set up some small pre-coolers at the farm level. Then some FPOs take responsibility to collecting this, like Amul model. What happens in Amul? The village society only collects the milk, then his role is over. Then union is processing this milk for various value-added products like cheese, paneer, butter. Okay, and the Amul is a marketing federation of all these district unions. So it is very well done in milk, and it is now organized sector in milk. If we can do, we can start with some 2-3 districts, and there are so many schemes of the National Horticulture Board, government, state government, central government are already available. Okay. So what I request Yogesh Dwivedi ji, already you have this consortium and 2,000 or more farmers with you. You can take the lead. If anything is required to support you from ASSOCHAM, we can support you. We can also support you for making the DPR. But this kind of the linkages are required in agri logistics. If it is a fruit and vegetable, it is a highly perishable item, and the market is every day. Suppose you sell wheat or pulses, the margin is 2 to 5% only. Okay, but in this kind of some primary processing and value addition, we can also sell some vegetables and fruits in cut and packed. Okay, or in frozen form. You only require to install some blast freezers in your these farm level facilities, and so I think this kind of activity can definitely support your FPOs and the farmers who are doing this organic farming. This was one point I just wanted to tell. Yeah. If anybody wants to comment, Yes, द्विवेदी जी, आपके विचार सर? बिल्कुल, जो धवल जी जो बात कर रहे हैं वो दैट इज द नीड ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, वो आज की समय की आवश्यकता है। और इनफैक्ट सर, हम लोगों ने अपने लेवल पे भी ट्राइड अवर लेवल लास्ट 2 years हम लोगों ने ट्राइबल्स वहाँ से
वेजिटेबल्स को एग्रीगेट करके, और भोपाल जैसे बड़े जो मार्केट बेसिकली, क्योंकि हमारा दिल्ली और यहाँ पे भी हम लोगों ने भेजा जरूर, बट मार्केट लिंकेज जो इन बोलते हैं ना, एंड बायर जो है वो हम उस तरह का लिया नहीं मिल पाया, क्योंकि जो क्वांटिटी लोग मांगते हैं वो बहुत छोटा छोटा क्वांटिटी रहता है, मतलब ट्रक लोड कोई एक आदमी लेता नहीं है, फिर उसको मंडी में ले जाना पड़ता है हमको, और मंडी में जो अभी प्रॉब्लम जो है कि वहां पे फिर वो ऑक्शन पे जाता है तो शुरू में कुछ प्राइस ठीक मिल जाता है, फिर वो जब मालूम होता है कि इनको तो वापस लेके जाना नहीं है, एनी हाउ दे नीड टू डिस्पोज इट, बिकॉज इसको वापस लेने जाएंगे, तो वो पूरा हमारा जो प्राइस है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। तो उसमें फिर हम लोगों को नुकसान हो गया, 2-3 हम यहाँ से ट्राई कर रहे थे पूरा एग्रीगेट करके, और वहां से सो जो आप बोल रहे हैं दिल्ली मुंबई का, बट वहां पे जो बायर है, जैसे हम लोगों ने बीच में सफल के साथ कुछ प्याज वगैरह का हमने भेजा था, हमारा ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन SFAC के माध्यम से किसान मंडी का एक कॉन्सेप्ट है वहां पे, तो हमने डेली भेजा था, तो सेल हो जाता है सर, बट पर्टिकुलरली जो पेरिसिबल ज्यादातर प्याज के अलावा और इनके अलावा जो हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें हमने संतरा वगैरह ही भेजा, बट बहुत ज्यादा प्राइस का रियलाइजेशन कुछ कुछ लाट में, जैसे कोई बोले ना 10 पेटी ले गया कोई, तो ठीक मिल जाता है, लेकिन जब हम ट्रक लोड देखते हैं और उसको, तो उसमें इस तरह का हमारे पास न खो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास है कोल्ड और इस तरह का फैसिलिटी भी नहीं है, तो उस तरह का प्रॉब्लम है, तो जी जी उसमें हेल्प हमें चाहिए। योगेश जी, आपकी बात सही है कि फार्मर को अपना जो प्रोड्यूस है वो बेच के आना पड़ता है मंडी में, और जो भाव मिले। बट आई गिव यू दिस एग्जांपल, आप क्या करना चाहिए कि आप सिर्फ 2-5 अच्छी वैरायटी जो है ना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फोकस क्रॉप पे आप कॉन्सेंट्रेट करो। लाइक देयर इज वन G4 चिली, ठीक है, देन सम फ्रूट्स, ठीक है, फिर यू कैन डू ऑल्सो फ्रूट पाउडर्स बाय डिहाइड्रेशन, यू कैन डू, थोड़ा आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा आपको, जो जैसे मैंने बोला कि एक बेबी ओकरा होता है, ठीक है, फिर एक वो बेबी मक्का मक्का जो मेज होता है छोटा वाला, जी जी तो ये सब प्रोडक्ट है ना, इसका मार्केट रेडी। अगर आप ये बोलोगे कि आई विल सेल सम क्या बोलते हैं कि कॉबी फ्लावर या ब्रिंजल, तो उसका मार्केट नहीं है। लेकिन ये आपको कुछ फोकस क्रॉप के ऊपर ही अपना क्लस्टर बनाना पड़ेगा कि आपके 100 किसान है, एक क्लस्टर में G4 चिली उगा रहे हैं, उसका आपको 500 किलो चिली, 1000 किलो चिली मिल रहा है, उसको आपको प्री कूलिंग करके आपको उसको भेज देना है, यहाँ आपको पैसा मिलेगा FPO को। राइट राइट, ठीक है ना, आप नॉर्मल ट्रेड में मत जाइए, थोड़ा वैल्यू एडिशन करिए, खुद ही उसको रिपैक करिए, खुद ही उसको फ्रोजन बनाइए, उसका पाउडर बनाइए, उसका फ्रोजन पल्प बनाइए। तो ये जो काम है ना, उसमें आपका फाइनेंशियल वायबिलिटी निकलेगा, और ये कैसा हो जाएगा कि देन इट विल नॉट सेल इन लोकल मार्केट, वो एक्सपोर्ट होगा और वो B2B हो जाएगा। आपको अगर 5 अच्छे, मैं आपको नंबर देता हूँ जिनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं, 5 अच्छे आपको एक्सपोर्टर मिल गए, जो लोग ये इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो आपको पूरे साल का काम दे देंगे कि हमें पूरे साल में इतना ये बेबी ओकरा चाहिए, इतना ये हमें ये G4 चिली चाहिए, इवन ये अपनी जो भाजी है ना, मेथी पालक, वो सबका भी वो क्यूब बनता है, फ्रोजन क्यूब, इतना छोटा छोटा, राइट राइट, और वो कंटेनर भर भर के जा रहा है यहाँ से। अगर आप ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो ऑर्गेनिक की तो बहुत वैल्यू है, आपके किसान ऑर्गेनिक है, आपके बड़े जो एरिया है आपके ट्राइबल बेल्ट में, दे आर डूइंग, बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, जी जी। हाँ, तो ये इसके ऊपर आप काम करिए। इसके लिए अगर आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, एक अगर प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बनाना है, हम बना के यू विल सबमिट इट टू द गवर्नमेंट ऑफ MP एंड नाबार्ड, या जो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उसमें हम देंगे, आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये काम ऐसा है कि इसमें जरूर से आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी मिलेगी। राइट, नहीं एग्रीड है सर, हम लोग इनफैक्ट इस पे अभी कर रहे हैं कुछ, हमें प्राइवेट पार्टनर से भी वो बात हो रही जो आप बोल रहे हैं, जस्ट पिछले 2 महीने में हम लोग जो नए FPOs पर्टिकुलरली है उनको इसी पे फोकस है, जो मार्केट प्रिफर्ड जो क्रॉप और वेराइटीज है उस पे जाए, ट्रेडिशनल पे जा करके, तो उस पे प्रोडक्शन पे तो वो कर रहे हैं, बट ये जो नेक्स्ट लेवल का जो आप बता रहे हैं इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग और इसमें और क्या हम फर्दर वैल्यू एडिशन करें, ताकि इसको थोड़ा, एक तो इसकी लाइफ बढ़े, और साथ में जो लिंकेज भी थी एक्सपोर्टर, उसमें हम आपकी हेल्प, हमें जरूरत पड़ेगा, और मैं कांटेक्ट करूंगा, मैडम से भी बात करूंगा
कि वी नीड सम कॉन्टेक्ट पीपल और कॉन्टेक्ट पर्सन के जो ऑलरेडी आर इन्वॉल्व इन एक्सपोर्ट, उनके साथ हम लोग करके एंड बेसिस ऑन देयर डिमांड्स, देयर प्रेफरेंसेस, वी विल प्रोड्यूस व्हाट एवर दे विल नीड एक्चुअली। तो हम लोग तो प्रोडक्शन में तो कोई जो कुछ चाहेंगे हम वैसा बना देंगे। और हमने तो ये रजिस्ट्रेशन भी ऑर्गेनिक का शुरू कर दिया है, क्योंकि आल्दो वो तो उनका हमने ट्रेसेबिलिटी और इसका आपका जो इसमें कोई भी केमिकल और इनके टेस्ट भी जो है रेसिडुअल, वो भी हम सब टेस्ट वगैरह हम लोग करवा रहे हैं, ताकि रहे कि मटेरियल हमारा फ्री ऑफ जो डेंजरस जो केमिकल उनसे फ्री है, केमिकल से, एग्रोकेमिकल से। आप हमारा कांटेक्ट करिए, नंबर लेके हम लोग बात करेंगे। सर मेरा एक जस्ट वन सजेशन सर, कि आपकी जो एसोसिएशन है वहाँ पे हम एक छोटा सा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। नाबार्ड से संजय जी हैं, जो धवल रावल है, हम एमपी में एक फिजिकल प्रोग्राम भी कर सकते हैं जहाँ पे आपके लोगों को थोड़ी जागरूकता हो, दे शुड नो व्हाट इज हैपनिंग, एंड देन एंड द सपोर्ट दैट वी कैन गिव फ्रॉम आवर साइड सर। श्योर इनफैक्ट दैट वी कैन डू इन मार्च या अप्रैल में भी, अगर आप करेंगे। एक हमारा एनुअल मीट होता है जिसमें काफी बड़े लोग आते हैं, मिनिस्टर वगैरह आते हैं, तो वो पूरा हम एक एनुअल, अभी इस बार बस कोरोना में पिछले साल हो नहीं पाया था, 2020 के बाद हुआ नहीं, तो वो हम उसमें चाहेंगे कि एक दिन हम फिर एसोचैम और आपके साथ हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो काफी बिल्कुल बड़ा सर। लोग आएंगे पूरे स्टेट से, और आपसे जो बिल्कुल। बेसिकली आपका जो इंडस्ट्रीज का जो एक्सपर्टीज है, जो सर बात कर रहे हैं, वो हम उसका फायदा हमारे एफपीओस को मिल सके, तो उसमें हम श्योरली हम जॉइंटली करना चाहेंगे। दैट वी कैन डू। हम स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें पार्टनर बना लेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपसे 1-to-1 कनेक्ट करूंगी इस पे, मैं आपसे जी। 1-to-1 कनेक्ट करूंगी इस पे। राइट। एंड सर, over to you for the vote of thanks, sir. Dhaval sir. Yeah. So thank you all the speakers, guests and participants. आप लोगों ने अपना बहुत ही कीमती समय दिया है हमें, और खास करके मैं नाबार्ड, टीसीआई, रिन्यू पावर, दैनिक भास्कर ग्रुप है अपना, स्पाइसजेट, सभी को मैं I say from deep heart thanks to giving support to this summit of agri logistics sector in Madhya Pradesh. We believe that these all agriculture related, all agri business related activities are always for the giving a support to the bottom layer of our society, that is a small and marginal farmer. And we hope that in the future also you will support us for the betterment of this farmer society and our agri and food processing sector. Thank you very much. Thank you, sir, and huge thank you to all the distinguished guests, the participants, and of course my team, Nishit, Rohit, Vipul. Sir, you all have been just great. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.